सो हाय एवरीवन। आज है 11 तारीख, शुक्रवार का दिन, एंड मार्केट ओपन हो चुका है। बिक्स देखो 20 के आसपास है, इसका मतलब थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। आसपास 50% का सेलिंग लेवल भी है। एंड इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, पहले 200 का 800 का ब्रेकडाउन दिखा के, सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, अगर 800 का ब्रेकडाउन दिखा के फिर अगर ऊपर गया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बुलिशनेस तो है उसमें। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी खुलते ही साथ 50,000 का ब्रेकडाउन कर दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है वो सस्टेनेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो बाइंग साइड का मोमेंटम है। So here we have added the positions successfully. कंटिन्यूशन के लिए डेफिनेटली हमने प्लान किया है यहाँ पर। Definitely there is a fluctuation in the premium which is very high due to the high VIX. So we need to see कि क्या continuation होता है यहाँ पर। So the premium that we have is 43,100. The price that we have got is 116. If the continuation further happens, which is very likely to be, एंड पहले ही कैंडल में थोड़ा सा रिजेक्शन जो शो किया है मार्केट ने, which is a good sign. At least the 800 breakdown will be expected, and if further this level breaks out, and good momentum can be seen. But the problem here is if market removes us by doing fluctuations, then we need to happily book the target or stop loss, whatever that may be. The rejection candle that premium has is looking good only, so there is no issue in that. But if the momentum does not happen fast, there could be a possibility of small retracement here, because it has taken support exactly from the previous day high. Definitely, people would be getting a little bit fear of buying at this position because already the gap is of 400 points and again stretched into the buying side. And there is very less likely to happen. People would be thinking that also. Successfully 800 breakout happened already. So need to see that where we can, as per the premium, we can place somewhere close to 140. We need to see. There is no need of getting hurried. There is previous to previous day closing price is there. Only point is market has taken support exactly from the previous day high. If
previous to previous day high, not exactly previous day, but previous to previous day high. So if market tries to remove, तो यहाँ पर जो 50% का लेवल था उसका तो ब्रेकआउट हो चुका है. And further here, can we see the retracement? Yes, we can, because यहाँ पर एक crucial level था. After this, the target should be this. So इतना crucial level का breakout करने के बाद अगर market यहाँ पर volumes के साथ selling दिखाता भी है, then also that will be not an issue for us. Because it has a good volume in it. So I am getting the confidence that yes, this is gonna be a trap for the sellers here. And also round number, which is 75,000 breakout happened here. So उसके breakout के बाद अगर buyers add हुए भी होंगे, very close to our stop loss. What you can clearly see here is the previous day high, which is respected here, first broken, then after it is respecting that. That means the candle might be opened here, and after that थोड़ा सा retrace back करके red candle दिखाया होगा, and after that buying side पे closing दिया है यहाँ पर, तो maybe might have attracted the sellers as well. But the candle in Bank Nifty does not look good. देखो अगर retracement ये reverse होने लगता है, then we could get the target of at least this breakout, which is 23,000, which is very, 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 very far away from our entry. But yes, we can see that at least 20 to 30 points of 50 points of momentum before that. We need to see that. We need to wait for that. 75,000 breakout already हो चुका है. तो उसके बाद क्या फर्दर रिट्रेसमेंट करता है मार्केट या फिर यही वो लास्ट कैंडल होता है जो कि ट्रैप सिनेरियो बना रहा है सेलर्स के लिए. अगेन थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर रहा है. Clearly you can see that due to that premium, which is just wait and watch. There is no need to worry about. This candle will be turned out to a retrace back candle because the volume that it has will be a good symbol. Just look at the reversal that is going to happen here. The price that we have got is 130.
There is a very less sign of possibility of reversal here, which is a good thing because more the prominent sign will be, more will be the probability of getting it done, right? So यहाँ पर जितना ज़्यादा रिजेक्शन कैंडल शो करेगा, that much it will be probable to go. No need to worry about. Bank Nifty also has done the breakdown of 800. At least this day high, or you can say the 855 breakout will be minimum expected from it. But yes, if the momentum does not happen fast, then due to the high VIX, premium meltdown will be happening so high. Previously also similar kind of scenario market has created. Because it has taken resistance from exact 50% of the entire selling swing. That's why people would be selling heavily looking at the rectangle. This is the 50% level of the entire selling swing. People would be selling, no doubt here. It can hold this position for 23,000 breakout. Look at the position right now. So that's why I have taken this position because there is a high, clear high, which is I told you that 139 would be the minimum expectation from it. And further market is going like hell. Look at this. Okay, so I forgot to place a stop loss in this position. It is very less likely to it will reverse or something like that. So I am holding this position with utmost confidence.
Place a stop loss. I have trailed a little bit, so that's why I can not lose up very much. But we will wait till this 15-minute candle closing because all these fluctuations are invalid at this point of time. Let it run. I will sit easily. At least 51,000 breakout would be expected in Bank Nifty, which is still not done. That's why I'm waiting. And if you tell about any position in Sensex, then 75,000 is there, 75,500. Let's see what our greed says. If we wait for more, we'll get more. Let it run smoothly. So this is a point of resistance. If market takes resistance there, then we have to hold this position for more because then after it will trap somewhere. Because when market price is there, if it takes resistance, then higher possibility will be it will go in our direction only. So let's see what market does around this price. Look at the premium also. Next possibility could be 191 from here. So why I can hold this position confidently is because market has opened so much of gap up. So लोग यहाँ पर definitely 2 minutes left for the client closing. So there is a small hurdle here. We'll get to know that will we gonna hold this position for long or not because only 1 minute 50 seconds left for the candle closing. So after this candle, there will be a possibility of small retracement. After that, the momentum will happen. So
I think my grid will say that hold for this momentum after a small retracement. Let's we have to see that because we are in options. So if the momentum does not happen first, then we have to see some sort of retracement. If the retracement happen, this will turn like this. Okay, so this is what I am saying, right? The momentum is pending. Before 1 minute, it should come because there is a crucial point here. If this point touches, then further huge momentum can happen. I'm planning to modify this till what? 6 seconds left for the candle closing right here. So after that, there will be a small retracement. So I need to just be cautious about that, or else we can place the limit order. But डरना क्यों है प्रॉफिट में चल रहे हैं at least I am hoping this breakout. So let's not greed very much. There will be retracement. I told you that this retracement we have to face. इसको सहने के बाद ही कुछ अच्छा ब्रेकआउट मिल पाएगा यहाँ पर वरना देखो टारगेट यहाँ पर सीधा सीधा 23,000 का है देखते हैं इतना होल्ड कर पाते हैं कि नहीं और क्योंकि शुक्रवार का दिन है ऑप्शन बाइंग का पोजीशन है सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ retracement also. No worries. I will update you whatever happens in this position. As I mentioned here, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट था मार्केट ने वहां से रेजिस्टेंस लिया तो दैट्स व्हाई आई कैन होल्ड दिस पोजीशन फॉर फर्दर मोर. So if in fluctuation I get 159, then also I will exit. I should modify it to 161 because I could have waited. I could have waited for further more 191 because I already told you that 191 will go. So no issues. If
goes till 191, then it will be a good for our analysis, and we will know that we are we have become good analysts right here. But let's see, let's enjoy the momentum here. देखो, as you can see, मार्केट ने अगेन एक ट्रैप दिखाया यहाँ पर, which is this candle with good volumes. उसके बाद फिर से रिवर्सल किया है उसको, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में आप ये समझ लो, अगर कोई डायरेक्शन आपके मतलब जो चार्ट बताता है वो नहीं होता, एक्चुअली चार्ट को पढ़ना आना चाहिए आपको कि उसके पीछे की कहानी क्या है। यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर रेड कैंडल देख के शॉर्ट किया होगा, उसको फिर से मार्केट ने ट्रैप किया बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ कैंडल। सो यू नीड टू नो दैट कि क्या मार्केट बताना चाह रहा है एंड क्या आपको समझना है उससे। बाकी अगर जो मार्केट बता रहा है, अगर मैं इसी कैंडल में जो मार्केट बता रहा है वही मैं सोच के चला जाता, देन आई वुड नॉट हैव बीन गिविंग गेटिंग दैट मच ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी अगर रेड कैंडल दिखा रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूएशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये रेड कैंडल मतलब सेलिंग हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। दिस इज द टिपिकल माइंडसेट ऑफ द पीपल, दैट इतना मिल चुका है और कितना ही स्ट्रेच होगा मार्केट, एंड मार्केट विल शो दैट नहीं, मैं और ज्यादा स्ट्रेच होऊंगा एंड प्लस 600 तक का मैं मोमेंटम यहाँ पर दिखाऊंगा सबको। So you need to know that kind of momentum also. So let's see, अगर कोई observation होता है then I will update you. Otherwise, this will be the end of the video. Thank you for watching and kindly subscribe our channel if you love this type of content like video. And one thing that I want to tell you that कि देखो यहाँ पर जो high बना है, this candle has made a high of 162 and we have booked at 161. So this comes with accuracy and expertise that कि कितना मार्केट यहाँ से स्ट्रेच हो सकता है। देखो, जहां पर रेजिस्टेंस लिया है वहां से थोड़ा बहुत और मोमेंटम होगा पॉसिबली, एंड ऑल्सो जो राउंड नंबर है उसको भी ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि जनरली वहां पर स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। तो उसके बाद एक पॉइंट क्या मोमेंटम नहीं दिखा सकता, आराम से दिखा सकता है। दैट्स व्हाई आई प्लेस्ड इट 161। 160 would be the number for stop loss of sellers and 161 is the fluctuation that I am hoping for. So this is at the top that I have booked. You need to नो दैट कि कहाँ पर लिमिट प्राइस को प्लेस करना है। जहां पर भी 160, देखो 160 एक राउंड नंबर है। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बना था, प्रीवियस कैंडल के टॉप का मतलब जो हाई लगा था वो था 156। सो इसके बाद क्या पॉसिबल, अगर 156 मार्केट फ्लक्चुएशन में आता है, देन फर्स्ट स्टॉप लॉसेस उनके हिट हो गए, सेलर्स के जो भी टॉप पे लगा होंगे, जो कि राउंड नंबर पे लगाते हैं 160 पे, उनका स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। उसके बाद एक फ्लक्चुएशन, बस एक पॉइंट का फ्लक्चुएशन, एंड वी हैव प्लेस्ड देयर ओनली। देखो 159 का मैंने पहले लगाया था, व्हाई आई हैव रिमूव टू 161, क्योंकि देखो 3 पॉइंट का ब्रोकरेज मेरा निकल जाएगा। 3 पॉइंट मतलब लगभग 300 रुपए, तो वो ब्रोकरेज भी तो आना चाहिए यहाँ से। तो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सटेंडेड द प्रॉफिट, क्योंकि 159 इज ऑल्सो ओके, बट यहाँ पर 160 अगर वन अगर प्रोबेबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 155 पे है और मैं 161 सोच रहा हूँ। जब 156 क्रॉस किया, इसका मतलब जो प्रीवियस कैंडल का हाई था उसका ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया। उसके बाद क्या पॉसिबल सिनेरियो, वो मेरे माइंड ने प्रोसेस किया, एंड ऐसा कंक्लूजन निकला कि 160 पे राउंड नंबर है एंड पीपल वुड बी प्लेसिंग स्टॉप लॉसेस देयर आल्सो, एंड उसके बाद एक पॉइंट का फ्लक्चुएशन हमें मिल जाएगा डेफिनेटली। दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड देयर। सो यू नीड टू थिंक फ्रॉम ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट व्हाट ऑप्शन सेलर्स आर थिंकिंग, राइट। सो अभी ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पर पहले तो सेल किया होगा, पहले 5 मिनट के कैंडल के बाद, looking at this red candle, and after that market trapped them. So this is what market is.